that bad? It's not that bad. 2.2 hours and 5 minutes. Are we ready for this? I've actually never shown my feed to anybody. Actually क्या होता है लोगों का feed और explore actually बहुत कुछ आपके बारे में बताते हैं, right? Right. Okay, so this is my explore page. So funny जब मैं आजकल के creators से बात करती हूँ ना, ask you, so you know how many subscribers or followers you had in 1 year, right? And they're like, oh, we got like 100,000 in a year. I'm like, great. Do you know how many I had in my first year? Okay. Yeah. 1,000 subscribers. बड़ी गंदी शक्ल बनाती हो लास्ट में दीदी, तुम्हारे लिए just for you मैं एक बार और बनाती हूँ. For many, social media has given them their careers. But just like everything else, there's a dark side to it. Here on Gram Life, we'll explore the other side to your favorite public figures' social media life. Hi, my name is Nayanika. Welcome to Mashable India and to a brand new episode of the Gram Life. आप सोच रहे होंगे आज हम रिक्शा में क्यों हैं? I hope it rings some bell because आज हमारी जो content creator है उन्होंने शुरुआत की यहीं इसी किसी रिक्शा से. We are here to meet the very amazing Anisha Dixit, aka Rickshawali. तो चलिए हम लोग एपिसोड शुरू करें. चलिए शुरू करते हैं. Let's go. Hi Anisha, welcome to the Gram Life. Thank you so much, Nayanika. I'm so happy to be here. So Anisha, we are going to go to the start of Anisha Dixit, the journey before Rickshawali. Yes. So, बहुत साल पहले, हर बहुत लोगों का ड्रीम है कि come on the silver screen in Bollywood and make it, and बहुत dreams थे उस time पे, right? So I born and brought up in Germany. And then I came to Mumbai और फिर बहुत साल भर तक मैं auditions देती गई, जैसे हर struggling actor होता है, just went on auditions आराम नगर में, सब ads के लिए, film के लिए, जो भी कुछ modeling के लिए. तो क्या हुआ उस journey में, you have dreams, पर फिर वो dreams, कर करके somehow वो shatter थोड़ा बहुत हो गया, because somehow I never made it. But पता है क्या है, somehow इन सब चीज़ों के दौरान में भी मुझे लगा कि नहीं यार कुछ तो होगा, कुछ एक ड्राइव था मेरे अंदर फॉर सम वेरी स्ट्रेंज रीजन. मुझे हमेशा लगता था नहीं यार गिव अप तो नहीं करना है. तो इसी दौरान में फिर सो आई वाज डेटिंग माय बॉयफ्रेंड बैक देन. सो उसी टाइम पे फिर मैं एक रिक्शा में बैठी और रिक्शा में बैठ के मैंने सडनली सेल्फीज लिए, जैसे हर लड़की हमेशा सेल्फीज लेती है, लाइक वांट टू लुक गाइस सो कूल आई एम इन अ रिक्शा. तो उस टाइम पे मेरे बॉयफ्रेंड मैंने उसको दिखाया कि देखो सी हाउ कूल इज दिस, एंड ही इज लाइक व्हाई डोंट यू डू समथिंग लाइक कॉल्ड रिक्शावाली. आई एम लाइक Rickshawali? What do you mean? Right. So he was actually initially the guy. It was his idea. हाँ, it was his idea. But idea देख के चलो, idea तो बहुत लोग life में देते हैं. करने वाला वो होता है. So long story short, this is how Rickshawali came about. I put my first video on YouTube. मैंने जब डाला भी वीडियो ना, मेरे को सबसे पहले मुझे लगा अब फटेगा, मस्त अब मजा आएगा. I got 10 views, and all those 10 views were my family and relatives and friends. देखो beginning में कुछ प्लान नहीं था, कुछ भी बनाती थी, मुझे आइडिया नहीं था कि क्या चलता है, because YouTube पे उस टाइम पे कोई था नहीं, so I didn't know. Of course with time अभी you understand algorithm, is a certain, you have to work according to the algorithm, sadly, and it takes, of course camera में it looks very, easy कि चलो हो जाएगा, वाह, like 15-20 second reel. अब तो रील का ज़माना आ गया. I'm talking about 10 minute के वीडियोस जो मैं YouTube पे बनाया करती थी, प्रॉपर स्केच. अब क्या चेंज हो गया रील्स के वजह से, इंस्टेड ऑफ 10 minutes अब हम लोग को 15 सेकंड का कंटेंट बनाना है. सो जो 10 मिनट में लोग 10 मिनट को टाइम था लोगों को हंसाने में, अटेंशन स्पैन वो 10 मिनट से 15 सेकंड हो गया. और you need to be very quick and very eye catchy in those 15 seconds. So it's very funny, right? Because अभी जो भी कोई pandemic के टाइम में आया, they all started on reels, so they're used to. But us creators who've been there, who've been making people laugh for 10 minutes, how do we now switch to 15 seconds? So वो plan बहुत interesting था, but see, it worked out eventually. We found out. तो उसमें भी अब instead of making like one script, we make like many scripts. Planning, honestly, is the same, but just instead of 10 minutes, it's now 15 seconds of 10 videos. Like you said 2013 में you started, तब it was new, but don't you think कि जो पहले से चल के आ रहे हैं, it was a little easier in the way that there's more scope, because now today everybody wants to be a content creator. It's got really competitive. I will disagree in some aspect, because मुझे लगता है कि उस
टाइम पे जब हमने शुरू किए थे राइट, उसमें वहाँ बहुत कम लोग हुआ करते थे, बट एट द सेम टाइम वहाँ पर एल्गोरिदम कुछ सपोर्ट नहीं करता था राइट. सो इट्स सो फनी जब मैं आजकल के क्रिएटर्स से बात करती हूँ ना, आस्क यू सो you know how many subscribers or followers you had in 1 year, right? And they're like, oh, we got like 100,000 in a year. I'm like, great. Do you know how many I had in my first year? Okay. Yeah. 1,000 subscribers in 1 year, and consistently uploading two videos a week. It's a good time now because now people understand. I feel there's a lot of things going in favor of the creators today, which we all struggled for back then. Yeah. Of course, yes, I agree. Back then creators नहीं थे, but back then बहुत सारे challenges थे. कुछ लोग को समझाना, educate करना, बताना, audience भी कैसे react करेगा, right? Audiences are like, what is this? There were a lot of opposition coming to me, especially as a woman, कि पहला I started speaking about a lot of taboo topics, periods के बारे में मैं गाया करती थी उस time पे, so a lot of people were still open for that. Correct. 10 साल में that struggle yeah, लगा है. Exactly. But it's all great. I personally feel it's the best time to be on social media. So Anisha, here on the Gram Life, basically, we actually want to get into the other side, right? People see Instagram, influencers ka Instagram feed as so happening, it's so glam. All they do every day is get up, sit on the makeup, photo shoot kiya, अच्छे से स्टूडियो में गया, डांस किया. No, but there's so much more behind it. Yeah, we want you to take us through that. And आजकल हर कोई content creator बनना चाहता है. Just show us the other side. Let's be honest, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अभी भी हम बहुत मतलब घंटों भर मेकअप में बाल बैठ के अच्छे से ऐसा मैं उठी नहीं हूँ ऐसे. हाँ, like it's not like that. जो हम लोग usually पता है ना, social life and real life अलग ही होता है, right? देखो, I think people like to put the best life forward on social media because they want people, they want to show their best selves. But ऐसा possible ही नहीं है कि everything is perfect, right? हम बिना मेकअप होके बहुत मतलब उठते हैं, मैं बहुत गंदी दिखती हूँ, मेरे बाल बहुत sad होते हैं, right? And sometimes there are days I don't want to shoot only. I think this is, I would say, the negative side to social media कि आपका ऑफिस आपके फ़ोन में है, तो वो 7 बजे के बाद बंद नहीं होता है. आप रात को भी जाके you are checking कितने views आए, कितने likes आए. It is always in your head 24/7. A, you're working for yourself, so you need to be like up to date. Yes. Secondly, it's in your phone. It's just so accessible that it doesn't leave your head. I feel कि मेरे साथ भी होता है, if I'm uploading a reel, you constantly go and refresh and check. How often are you doing that? You really want to talk about this? Yeah. This is important. Oh God, okay, let's get into it. So honestly, देखो, beginning में of course it was very, as you mentioned, right? Phone इधर ही या हाथ में ही है, directly कभी भी, like एक वो हो जाता, आप कुछ कर रहे हो, देख लो जल्दी, हाँ. Right. देख लो जल्दी, हाँ. So I used to do that a lot, to be honest, पहले. But then of course with time you have to realize कि this can't be your life, right? आप इस चीज़ पर डिपेंडेंट हो, आप कॉन्स्टेंटली अपनी एंग्जाइटी को इससे फुलफिल कर रहे हो कि वो कितना हुआ राइट, बिकॉज इवेंचुअली इट्स ओनली योर एंग्जाइटी टू फाइंड आउट ये अच्छा जा रहा है कि नहीं, इज इट गेटिंग लाइक्स, इज इट गेटिंग व्यूज, राइट. So I think every content creator can relate with this, right? That we have this tendency to do that. But eventually I realized अगर मैं उस पर stop नहीं डालूंगी, I cannot fulfill myself because I'm dependent on that. Right. So I'll go थोड़ा सा deeper in this. The reasoning is कि let's go into the question कि why do we keep checking it? Why do we keep checking? Very important to address that. It's actually very important और लोग इसके बारे में बात ज़्यादा करते नहीं है because we are checking this to fulfill our own happiness. Right. So इसके लिए हम लोग जो भी कुछ लाइफ में करते हैं हम खुश होने के लिए करते हैं. ये थोड़ा स्पिरिचुअल चीज़ मैं बोल रही हूँ, बट ये है एक बहुत बड़ा फैक्ट एंड आई हैड अ बिग लर्निंग ऑफ इट. I really now am very conscious about how often I check it because ये भी unconscious behavior है. Constantly checking. So we have to as human beings be very careful about it. So you are mindful of your screen time now. Yes, very much. I try. That I actually want to check your Instagram time. No. We'll find out, guys. कितना झूठ अनीशा बोल रही है actually अभी. कितनी mindful है अनीशा? Okay, देखते हैं. मुझे भी actually पता नहीं है कितना है. So I'll tell you. Go to your IG app. हाँ, okay. And you go to settings. Okay, 1 second. And over there, time spent. Pick करो. पहली बार मैं भी मुझे जानूंगी अभी कितना है. Reality check on Anisha. I'm not actually shocked. It's not so bad. I don't know. Is that bad? It's not that bad. 2.2 hours and 5 minutes in a day.
what's yours? Now you have to tell me, huh? So my activity is actually... Let's find out. Now you're saying 30 minutes. Okay, my yesterday's average was actually a lot, 1 hour 49 minutes. Not bad, but listen, not a big difference. Not a big difference. 2 hours, 5 minutes and 1 is almost same. Almost similar. So this just got interesting. Yes, it did. बाहर मौसम भी बहुत अच्छा है. It's pretty interesting. We're having October rains. So let's go out and sit. Yes, let's go. बारिश में हम लोग कभी enjoy करते थोड़ा सा. Let's go. Come, Morty. We just had an insight into your activity for Instagram. Yes. Show us how your feed looks like. Okay. I don't know. Are we ready for this? I've actually never shown my feed to anybody. My feed or explore page? What do you want to say? Both. We'll dig deeper even. Alright, let's go deeper into my... Actually क्या होता है लोगों का feed और explore actually बहुत कुछ आपके बारे में बताते हैं, right? Right. Now we're seeing the reality of my feed. Okay, so we have Sunny here, so very good friend of mine. I don't see actually कौन next आ रहा है. Sejal, and then I think friend Raj. कौन और आ रहा है? Your friends. My friends. Now. So ये मेरा feed है, ठीक है? And then we go Let's have a look my at the explore page. Oh God, reality अभी disclose होने वाली है. Okay, so this is my explore page. Actually, I think I'm going to move it for you. I think it's not very that interesting. ऐसा कुछ मतलब controversial नहीं है. I guess मैं कुछ controversial search नहीं करती. Just shows what kind of content you consume. हाँ, so वही मतलब comedy, relatable creators, pictures, actors. I think जो आप सबसे ज़्यादा मेरा काम ही ये है ना, तो मैं यही करती हूँ. But Anisha, how often do you share your personal stuff on social media, YouTube, Instagram, and all that? Not very often. देखो, it depends. मैं ना अपना personal और work life separate रखती हूँ ज़्यादातर, because मैंने बहुत देखा है कि when you share, over share हो जाता है, तो it's too much. It's just my देखो दूसरे जो भी creators वो कर रहे हैं, that is completely everybody's personal choice. Right. My personal choice, and I've seen that कि I don't want to people interfering in my personal life. It's my decisions जो भी मैंने लिए हैं, और उसमें वो बहुत toxic भी हो जाता है फिर, because फिर क्या होता है, limit किधर है, कितना आप share करोगे, कितना आप नहीं share करोगे, right? आप क्योंकि क्या you come into this trap where you like इतना दिखाया, अब ये भी दिखाते हैं, अब ये भी दिखाते हैं, so there's no limit to it. Because right? I also feel that the business side of it also works that way, because people want to know your personal stuff. एक बार आपने house tour दिया या bedroom tour दिया या personal कुछ भी share किया, the views, the comments, there's a lot of interaction. So the creator also tends to think कि like you said कि और इसका डालते हैं. It ultimately might have a... See क्या होता है actually, and I do know कि अपने especially Instagram पर right, people connect आपके पर्सनल लाइफ से, जितना आप पर्सनल चीज़ें दिखाओगे उतना वो कनेक्ट होता है, उतना अच्छा होता है फॉर द बिगिनिंग, राइट? बट इवेंचुअली वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है. Anisha, you've also been very vocal about that you constantly keep a check on your mental health, because the space that content creators live in, or the whole the algo, the gram life, is actually about showing your best life, but somewhere everybody at the end of the day is a human having their lows from time to time. But how often do you portray those lows as well to the people? Secondly, how do you keep a mental check on your own health? So there are two things to it. First thing is कि yes, सोशल मीडिया इज़ वेरी कंज्यूमिंग. लोग जो ऑनलाइन मतलब जो देखते हैं, राइट, ऑडियंसेस, दे सी कि ओ वाओ उनकी ये लोग क्या लाइफ है, कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, मस्त है इनकी लाइफ, मस्त लाइफ है एकदम, राइट? एक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? बहुत काम जाता है उसके पीछे, 24 आवर, लाइक ऑलमोस्ट यू वर्क डे एंड नाइट फॉर द कॉन्टेंट, और वो बहुत मेंटली बहुत लाइक ड्रेनिंग हो जाता है. करेक्ट, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज आप कॉन्स्टेंटली कुछ बना रहा है, नेक्स्ट यू ऑलवेज थिंकिंग नेक्स्ट, एक वीडियो डल के नेक्स्ट कब है, एक वीडियो डाल दे नेक्स्ट, अब हमेशा नेक्स्ट का सोचना ही पड़ता है, राइट? सो इवेंचुअली जो भी ये एक प्रेशर भी हो जाता है, राइट, लोगों का, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिएटर्स भी हो गए एज वे सेइंग, राइट? बट यू स्टिल नीड टू मेंटेन योर आई एम स्टिल पार्ट ऑफ इट, नॉट सेइंग एज अ कॉम्पिटिशन, बट स्टिल लाइक आपको अपना कॉन्टेंट, आपका एल्गोरिदम, आपका ब्रांड, सब कुछ इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट, राइट? सो आप हमेशा प्रेशर में समवेयर हो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग कॉन्टेंट, तो उसके वजह से ऑफकोर्स मेंटल पे बहुत प्रेशर आ जाता है. और पहले व्हाट हैपेंड इज अ फ्यू इयर्स अगो इट वाज ड्रेनिंग, राइट? आप बहुत बार मैंने सोचा कि मैं चैनल को बंद कर दूं कि आई कांट कंटिन्यू इट एनी मोर, बट why did that thought come up? Yeah, because you're like you can't do it anymore.
बहुत ऐसे क्रिएटर्स होंगे जो बोलेंगे दे एवरीबडी हैज़ फेस दिस मोमेंट व्हेन यू डोंट वांट टू कंटिन्यू कि दिस इज इट, कितनी देर के लिए आप वो करते जाओगे मतलब यू हैड नो टाइम फॉर फैमिली, फॉर माई हस्बैंड, फॉर माई nobody you had time for anymore because you're living and breathing for content every day. So वो टाइम आ जाता हर किसी के पास कि यार अब कैसे करें. We are just living in this world, we call this माया, और इस वर्ल्ड में जो लोग हमको बोल रहे सिखा रहे हम बस वो करते जा रहे एक नो रैट रेस में फंसे हैं. बट वी आर नेवर लाइक टेकिंग द स्टेप आउट की गोइंग अवे फ्रॉम इट, लाइक वेट व्हाई एम आई क्रिएटिंग सो मच मिजरी फॉर माई सेल्फ. जैसे अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट. इफ ए वीडियो डजंट डू वेल, अगर व्यूज नहीं आ रहे तो क्या होता है यूजुअली लोग बोले ए क्यों नहीं हो रहा है यार, क्या कर, you get in a hole. yes you fall in a hole. एंजाइटी खुद आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो, राइट. बट बाहर वाले को लगता है कि कितना सॉलिड मस्त चल रहा है. करेक्ट, ऐसा नहीं है, बट खुद को ऐसा लगता है. पर फिर आप ना रियलाइज करो कि यू आर डिपेंडेंट फॉर योर ओन हैप्पीनेस ऑन दैट व्यूज, ऑन द कंटेंट. आप नहीं समझो कि आप ही एक्चुअली खुद क्रिएट कर रहे हो. अगर आप खुद को बस बोलोगे कि नहीं यार क्या हो गया है, एक बार नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, राइट. We are dependent on things. On that note, we'll actually get into a segment called the dark side, where we want some dark and some honest answers. Oh God, the darkness has come upon me. Have to be damn honest, okay? Oh God, ठीक है, मैं try करूँगी. Okay, let's start. That one thing on the gram that you've done that you're not proud of. बहुत अजीब videos post किए, like I skied down a slope in Switzerland in a sari. It's very random, but मैंने बहुत मतलब I'm talking about 8 years ago, मैंने उस टाइम पर वो चीज़ की थी, वो शायद. हाँ. That one post on your gram where your real life was much better than your real life. वो तो चलो ऐसे there are a lot of videos like that because many times when you don't feel like it you still post it. So honestly I wouldn't say 50 but 20% of my videos are like that. I don't know which one you want me to bring out. पहले वाले videos, अभी के नहीं. अभी के नहीं. हाँ. That one person that you have stalked non-stop. My then boyfriend, I have stalked a lot. I guess we all relate with boyfriend stalking, and like Prajakta mostly seen is so Prajakta, amazing. Oh my God, Prajakta has just killed it, and I love stalking her profile, and she's doing so well. Bhuvan, of course, Ashish is there. There's so many amazing creators, so I stalk them. Don't stalk them, but I watch them. Fun Show is there. I love Fun Show. You know, Just Neil Things and all these guys are great. So comedy film, I stalk a lot of people because I get so inspired by what they are doing and what can I learn from them. That one thing on the gram that actually shook you. I think I'll talk about that when Mumbai ka Nikhil and Shanish Shestra actually said, you know, they're becoming parents. That shook me. I didn't know that. I'm like, wow, what? You guys are having a child now? So yeah, that shook me. Okay, shook you in the good way. Yeah, but in a good way. I was so shocked and happy for them. One trend that you hated but did anyway. Kacha badam trend. There was this kacha badam trend where you move your booties and all. See, I didn't do the trend. I actually made fun of the trend, but I still did the trend. But that trend was something थोड़ा सा cringy. मैंने उस पे एक roasting reel भी बनाया था, but end में भी मैंने किया था. So वो मुझे थोड़ा सा, but it's fine. It is what it is. It's one of the biggest trends that happened actually. How much do you succumb to the power of gram? You know, using filters or again the trends like we said. So filters so I don't use. Maybe just one Paris filter stories पे होता है. Paris is तो I think mandatorily it comes. It's like it just makes your the dark circles थोड़ा सा dark circles को हटा देता है. That's it. One swipe that I do. Otherwise I don't use filters at all. And trends, of course, हम content creators को तो we live for trends, right? Like I don't do, of course, I'm not a dance creator, you know, or like a transition creator. So of course वो अलग trends होते हैं. But of course, comedy maybe there's so many other trends that happen, right? Something that like currently there is this what's up bro, what's up bro, what's up bro, what's up, what's up bro. You know, those trends of course somewhere you do because it's a part of your job eventually, but not every trend of course. How often are you comparing yourself to people on the gram? Constantly. And I say that for a reason because it helps me become better at what I do, right? I don't see them as competition, I see them as a way for me to grow as a person, how I can, become better and what I can work on, so I use them always as inspiration. Refresh and check after posting one piece of content. How often do you do that? I think every creator will say they will do it a few times, of course, because क्या होता है,
जब आप पोस्ट करते हो ना कंटेंट, द बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इफ इट डजंट डू वेल इन द बिगिनिंग, इट वोंट डू वेल later also. But how often do likes and followers actually impact you? I know right now you're big, so you might say that it doesn't, but initially I'm sure it did. बहुत, of course, हर कोई, I mean I guess I'll be lying if I say कि वो नहीं मैटर करता, कि I am chill, doesn't matter कैसी लाइफ चल रही है, because beginning में आपको पता भी नहीं है ना, आप देखते हो, आप कंपेयर करते हो, एज आई मेंशन, राइट, कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रहा आप इस फील्ड में कैसे एक्सेल करोगे, राइट? सो ऑफ कोर्स बिगिनिंग में लगता था कि यार मेरे को क्यों नहीं लाइक्स आ रहे हैं, मेरे को फॉलोअर्स क्यों नहीं आ रहे हैं. What if Instagram shuts tomorrow, Anisha? I have YouTube. Thank you YouTube. What would your life look like without the gram? Actually बहुत मुश्किल सवाल है, बिकॉज अब मेरी पूरी लाइफ यही हो गई है ना. सी ओरिजिनली मुझे तो एक्टर बनना था, अभी लाइफ कैसे और हो जाती. I think I would be a nice, like normal girl. Maybe I would be traveling a lot. But not shooting it. Not shooting it. Maybe take a few pictures here and there. But I'd be just like, normal, happy, travel, eating, and having fun in my own way. That's kind of it. For what element do you mostly get trolled on IG? Is it, say, the style of content, or maybe your dressing style, or what you talk about, or do people attack your personal life? What has been your take on it कि इस पे ज़्यादा hatred मिल रहा है, and you end up thinking why? Being a woman, I think beginning में वो तो सबसे ज़्यादा issues हुआ करते थे, and because there's not many women who spoke up. अब इतना शायद नहीं है, because things have become better, but I did definitely with the fact कि as a woman I'm speaking up. That was the biggest problem for me, and many people didn't approve कि all the right things, like the things I'm saying for women, girls should speak up, girls should tell their opinion online. जितने ज़्यादा women आएंगे उतना better है. अब actually I will say, see, the most trolling that happens is that all they don't like my content. आपको cringe लग रहा है, जो भी लग रहा है, आप चले जाओ, मैं वैसा उनको बोलती हूँ. बट यूजुअली ये आता है, बट देखो अब नॉट एवरीबडी इज मेड लाइक्स एवरीवन, राइट? अगर ऐसा होता है तो इतने सारे कमेडियंस नहीं होते. सब कमेडियंस को सेम फॉलोअर्स थोड़ी ना है. एवरीबडी हैज देयर ओन नीश. With that note, we'll actually head on to our last segment, where Anisha is going to shut the F off trollers. So this one's your troll number 1, carefully picked. So there's a picture of Anisha with all the camels. ये मेरे सऊदी ट्रिप का पोस्ट है. इंटरेस्टिंग. ओके, Mickey _2572 said I only see camels, where are you? मेरे को भी सिर्फ camels दिख रहे हैं. I also see camels. Got it, right? Got it. M_Gond_AI. ये तो पहले अपना नेम चेंज अप करवा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. आपके वीडियो से लगता है शक्ल कितनी भी खराब नहीं ही क्यों ना हो, टैलेंट होनी चाहिए फेमस होने के लिए. वाह, तारीफ भी, और यही तो तारीफ के साथ साथ उसने मुझे बुरा भी लिखा है. बट यू नो व्हाट, आई अप्रिशिएट दैट, बिकॉज किसी ने मुझे कुछ खराब भी बोला, अच्छा भी बोला. आई लाइक इट. Okay, this is one of your patent pictures, placard your style. Okay. So don't get excited from Ranbir Alia's wedding. We are not invited. अच्छा, that one, yeah. That, Okay. But it's a fact, we were not invited. Trollers ने comment भी किया है, तो ये करने की क्या ज़रूरत है? पागल हो गए हैं क्या सब सोशल मीडिया पे लाइक्स के लिए? यार देखो, भावनाओं को समझो. ये मैंने फन के लिए पोस्ट किया था, तो अगर आपने दिल पे ले लिया तो आई एम सॉरी, बट इट्स अ फैक्ट, वी वर नॉट इनवाइटेड एंड सो weren't you. This one. हाँ. This reel of yours applying. Psychopath, how normal girls put lipstick. Okay. बड़ी गंदी शक्ल बनाती हो लास्ट में दीदी. यार देखो, तुम्हारे लिए जस्ट फॉर यू मैं एक बार और बनाती हूँ. मजा आया? अच्छा लगा? अगर अच्छा नहीं लगा तो स्किप कर दो, चलेगा. Stop celebrating 1 month anniversary, and it reads. इसमें क्या लोगों ने लिखा है? Jordan_Vinay, stop exposing your armpits. आर्मपिट दिख नहीं रहा है, बट अगर मैं एक्सपोज करूंगी तो अगर आपको अच्छा नहीं लगा, आप बस स्क्रॉल करते जाओ एंड आप इग्नोर मार दो. पर मेरा प्रोफाइल है, so I do what I want. ठीक है? With this, Anisha, we would like to wrap up. We actually took a lot of your time, got really deep with you, chatting and everything, and I'm so glad that you were
open about a lot of subjects, and you shared those insights with our followers. I'm so happy. I'm so glad that I was part of this, of Mashable. This was so awesome and so insightful, and thank you for having me. देखिए, अगर आपको ये episode अच्छा लगा, if you enjoyed my conversation and want to, see more amazing content on Mashable, तो definitely like करो उस वीडियो को. नीचे एक लाल बटन है, वो क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो उस वीडियो को. If you learned something from this episode, bye. Bye. See you next time. See you.